Hello, my dear students. Once again, welcome back. MS-CIT इरा सेशन नंबर 21 में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं सेशन नंबर 21 का नॉलेज चेक टेस्ट 1। सो इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो उसका क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट डू द फाइन लाइंस अराउंड द फोरकास्ट लाइन रिप्रेजेंट? उसका आंसर है दी लोअर एंड अपर कॉन्फिडेंस boundaries. Next question. What can goal seek help you with? उसका आंसर है सी, ड्रीविंग इनपुट वैल्यू फॉर अ desired output. Next question. The forecast sheets command in Excel can only be used to create charts. इसका आंसर है बी, false. Next question. The set cell box in the goal seek window displays the selected dash. तो इसका आंसर है डी, cell. अभी नेक्स्ट नॉलेज चेक टेस्ट 2 सेशन नंबर 21 की हम देखेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल enable you to see the row and column headers? तो इसका आंसर है सी, शो रो हेडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर अ राउंडिंग नंबर फॉर्मेट which currency type to do you need to select for changing a to dollar symbol to INR? तो इसका आंसर है बी वाला, ये वाला इमेज. नेक्स्ट question, what happens in the column for differences between when the projected cost and actual cost offer? इसका आंसर है ये, the value changes to red color. Next question, identify the save button present on the top of document in MS Excel. तो इसका आंसर है डी, ये वाला इमेज. नेक्स्ट सेशन नंबर 21 के नॉलेज चेक टेस्ट 3 अबाउट पेरेंटिंग विथ एआई टूल, हेजिन एआई टूल के ऊपर क्वेश्चन आंसर है. खाली एक ही क्वेश्चन है, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हेजिन एनहांस द रियलिज्म ऑफ एआई जनरेटर अवतार्स? सो इसका आंसर है बी, बाय यूजिंग डीप लर्निंग टू मैच लिप मूवमेंट्स विथ टेक्स्ट. नेक्स्ट सेशन नंबर 21 का ही नॉलेज चेक टेस्ट 4, उसके बारे में, अबाउट पेरेंटिंग टूल, सॉरी पार्टनरिंग टूल एआई, स्लाइड गो एआई टूल के ऊपर क्वेश्चन है. तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज स्लाइड गो ensure design consistency when users edit content? इसका आंसर है बी, by automatically adjusting colors and fonts. Second question, which AI driven feature of SlideGo is showcase here? ये वाला इमेज है और उसका आंसर है ए, एनएलपी बेस्ड कंटेंट जनरेशन. नेक्स्ट सेशन नंबर 21 का ही सेल्फ पाथ लर्निंग टेस्ट है, ऑन टॉपिक मंथली एक्सपेंसेस सी शीट एंड व्हाट्स न्यू इन एक्सेल 365 ऑनलाइन. सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पलेट्स विल यू यूज टू क्रिएट अ मंथली एक्सपेंस शीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो इसका आंसर है सी, हाउस होल्ड मंथली बजट. नेक्स्ट क्वेश्चन, identify which of these steps are correct to use a template in Microsoft Excel. इसका आंसर है ए, MS Excel. Search for online templates, select the most suitable templates, create. Next question, identify which of these steps are correct to save a new file in Microsoft Excel so that you can come back to edit it. So इसका आंसर है बी, फाइल मेनू, save as or save location, enter file name and save. Next question, your friend is new to Microsoft Excel. Help him identify which of the following groups from the home tab he can use to change the currency in his file. So इसका आंसर है ये, नंबर ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct set of states used to change the currency of selected cells in Microsoft Excel. So इसका आंसर है ये, click on the number format option, select currency, then select rupees symbol, click OK. नेक्स्ट सेशन नंबर 21, सेशन कंप्लीशन टेस्ट, जो ईच एंड एवरी सेशन में होती है. सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर असाइंड टू
क्रिएट अ डिजिटल सेफ्टी ऐप, व्हाट फीचर मस्ट इट इंक्लूड? इसका आंसर है बी, एंटीवायरस स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज डिसाइडेड टू बिल्ड अ टूल दैट बैक्स अप डाटा डेली, व्हाट कैटेगरी विल इट बी? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर है यूटिलिटी टूल्स बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डिस्क क्लीनअप? इसका आंसर है सी, फ्री अप स्टोरेज। नेक्स्ट, Sahil's laptop shown a virus warning. What utility first? C, antivirus. Next and last question. A student deletes projects folder. What can help recover it? इसका आंसर है सी, नॉर्टन यूटिलिटीज। तो इस तरह से ये था सेशन नंबर 21 के नॉलेज चेक टेस्ट, सेल्फ पाथ लर्निंग टेस्ट एंड सेशन कंप्लीशन टेस्ट के क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर देखे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखकर आपका सेशन सॉल्व कर सकते हो ताकि आपके मार्क्स माइनस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।